हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लिटरेरी ट्यूटोरियल बाय निशा मंगला। आज का हमारा जो टॉपिक है वो लेसन प्लान फॉर्मेट के ऊपर है। प्लीज आप इसको ध्यान से देखें एंड वॉच इट टिल द एंड बिकॉज आई वुड बी गिविंग यू द डिटेल्स ऑफ द लेसन प्लान, हाउ इट शुड बी. Don't follow that old typical method that people has been following from ages, right? So this is the format you have to follow and it should be in this sequence only. One more thing to remember is grammar, prose and poetry, they are the different one. Prose and poetry has the same format, but the grammar has a different format. So you have to keep in mind the topic and your grammar, prose or poetry before attempting your lesson plan. So please stay carefully, watch carefully and write carefully. Okay, so let's start with it. Let's start with the lesson plan. Okay, so first of all, this is the way how you are going to write your lesson plan. PT roll number, whatever roll number has been assigned to you, you would be writing here, like I have written 18. Then coming on to the class, the one you are going to teach, जो आप teach करना चाहते हो उस class के बारे में लिखोगे, not your existing class. Okay, then the subject you are going to teach, then comes the topic, like I have written noun. So whatever topic you are going to deliver, you are going to write the topic name over here. Then date, on the date which you are delivering your exam. Then the time, what time have been assigned. Like generally the time that has been assigned to the teachers for one period is 35 to 40 minutes. So you can write as per your need. Then total number of students existing in your class, like I have written 40. So it can be 30 also, 35 to 40. So students' linguistic background, like I am from Punjab, so the student have the knowledge of English, Hindi and Punjabi. So I have written that. If you are from other state, you can write as per your need, right? Okay, then scrolling down, general aids. Okay, so first we are going to talk about the general aids. Okay, so the general aids that you have in your classroom, that are the blackboard, chalk, duster, pointer, textbook, etc. जो भी आपकी क्लास में अवेलेबल है, हर टाइम अवेलेबल होता है, वो आपने लिखना है यहाँ पर. ठीक है, क्योंकि हर टाइम आपकी क्लास में ब्लैकबोर्ड भी होता है, चौक, डस्टर, ये चीजें अवेलेबल होती हैं. नेक्स्ट इज द स्पेसिफिक एड. ये जो स्पेसिफिक एड है वो आप किस अकॉर्डिंग करोगे, जो आपके टॉपिक है उसके रिलेटेड जो भी आपने चीज बनाई है या लेकर आए हो उसके अकॉर्डिंग हो. जैसे रियल एड आप लेके आए हो, जैसे अगर नाउन पढ़ाना है तो कोई भी होली बुक आप ले आए, राइट, या कोई भी मॉन्यूमेंट की पिक्चर है तो पिक्चर्स में आ जाएगा. पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अगर आपने बनाई है तो वो हो जाएगा. फ्लैश कार्ड्स या चार्ट जो भी आप लेके आए हो वो सब कुछ यहाँ पर मेंशन करना है. यू हैव टू मेंशन ईच एंड एवरीथिंग ओवर हियर. देन कम्स द जनरल एड, general aims, right? General and specific aim. You have to write in this way only. Don't make the column and then write, okay? So that won't be the right one. This is the right way to write it. General aims. When you're going to talk about the general aims, in every lesson plan you can write this thing. जनरल एम का मतलब हमारा टीचिंग इंग्लिश का क्या एम है? टू एनेबल द स्टूडेंट्स टू डेवलप देयर इंटरेस्ट इन द लैंग्वेज. सबसे पहले हमारा जो एम है कि बच्चे का इंटरेस्ट हो, वो बच्चा बोल सके और राइट कर सके. टू एनेबल देम टू स्पीक एंड राइट द करेक्ट इंग्लिश. देन टू एनेबल द पीपल टू प्रोनाउंस द वर्ड करेक्टली, राइट. देन कम्स द स्पेसिफिक एड, राइट. स्पेसिफिक एड, अब स्पेसिफिक एड जो है उसमें क्या होगा? टू एनेबल द चाइल्ड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट नाउन, राइट. That the child can understand the concept noun. Then to enable the student to use different kind of noun, to enable the pupil to differentiate between various kinds of noun. अब बच्चों को यही नहीं पता होता कि कितने टाइप ऑफ नाउन है, कौन कौन सा किसको रेफर करते हैं, तो वो सब इससे बच्चे को पता लग जाएगा. Then to enable the student to make or frame sentences properly by using the noun. Right? Moving on to the next one. Now,
First thing, very important thing for the lesson plan is the PK testing. Now, PK testing is what? Previous knowledge testing. So, the content, the questions you are going to ask should be according to the topic, right? And first answer should be followed by the next question, right? Now, what is your name? Where do you live? So this is in interconnected questions, like I'm asking the same person, what is your name, where do you live? Then I can move on to the next one, like the person have said India, so I can say which is the national animal of India by showing a book in my hand. What is this? By showing a specific book like Bible or something like that, or you can show a picture of that. Then what are these words collectively known as? ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि ये सारे वर्ड्स जो आपने अभी बोले हैं इनको हम कलेक्टिवली ग्रामर में कैसे यूज कर सकते हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. Now the fifth question can be such that the child can answer also and cannot answer also. So it is upon to the child according to the understanding or the knowledge of the child. Now next comes the announcement of the topic. Now well students, as you are familiar with the words, so today we shall learn a new topic now. अब ये जो पीके टेस्टिंग है इसका मकसद क्या होता है कि हम ये देखना चाहते हैं कि बच्चे जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उसके साथ फेमिलियर हैं कि नहीं और कितने उनको नॉलेज है ताकि उस बेस में हम चल सके, राइट. देन आफ्टर द अनाउंसमेंट देयर विल द प्रेजेंटेशन. अब यहाँ पर क्या करना है आपने, कंटेंट, ये 4 सेक्शंस आपने बनाने हैं. कंटेंट और मॉड्यूल 1 जिसमें आप नाउन लिख दिया, नाउन की डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स, राइट. आपने सिर्फ हेडलाइन लिखनी है. यू आर नॉट सपोज टू राइट द एंटायर थिंग, और इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट जस्ट अ फ्यू थिंग्स, नॉट द एंटायर थिंग. देन पीटी एक्टिविटी. पीटी एक्टिविटी में आप क्या लिखोगे? पीटी विल read the definition. PT will read the definition of the noun with proper stress and intonation. Now that is very important. If you are a teacher, then that you should know how to stress, how to pronounce a particular word, right? So the teacher will, because the student is going to imitate you, right? So this is the way how you are going to write your thing. PT will read the definition of the noun with proper stress and intonation. Now, when the teacher is reading, what the pupil is going to do, pupil will listen carefully and note down in their notebooks. Now, it is teacher's duty to write it on the blackboard. So, definition of the noun is written on the blackboard and the child is jotting down. So, you have to mention each and everything. Next comes, PT will explain the noun with the help of टीचिंग एड. ठीक है, अब उसको एक्सप्लेन करना है तो किसी आप जो स्पेसिफिक एड ऊपर आपने मेंशन किया है उसकी हेल्प से आप लिखोगे, तो यहाँ पर आपने वो स्पेसिफाई करना है. तो जब आप एक्सप्लेन कर रहे हो तो बच्चे क्या करेंगे, पीपल विल ऑब्जर्व केयरफुली एंड अंडरस्टैंड द कंटेंट, राइट. देन कम्स पीटी विल गिव द एग्जांपल्स टू इलैबोरेट द नाउन. ठीक है, अब उसको इलैबोरेट करने के लिए एग्जाम्पल देगा. तो पीपल विल लिसन केयरफुली एंड नोट डाउन इन देयर नोटबुक. यहाँ पर पीटी की जगह पीपल आएगा, राइट. तो यहाँ पर उसने एग्जाम्पल से बोर्ड पे लिखा और सारा वो इसी तरह आएगा. सो दिस इज द वे हाउ यू आर गोइंग टू वर्क ऑन ऑल योर मॉड्यूल्स. देयर शुडंट बी मोर देन 3 मॉड्यूल्स. सो maximum you are going to make 3 to 4 modules, not more than that, right? Okay, then moving on to the next one. What comes after this is terminal behavior testing, या कई लोग इसको क्या बोलते हैं, recapitulation. Final recapitulation. ठीक है, तो it's up to you what you want to write, terminal behavior testing or final recapitulation. So the PT will ask few questions to the students. अब ये जो क्वेश्चन है वो पीके टेस्टिंग से बिल्कुल ही अलग है, या आपने जो कंटेंट के अंदर पूछे हैं उससे thoroughly different है, entirely different. You're not going to mix this
all the 2, 3, 1, राइट। अब टर्मिनल बिहेवियर टेस्टिंग में क्या है, आपने वही चीजें पूछनी है बट कुछ बेहतर तरीके से, राइट। तो आपने जो कंटेंट पढ़ाया है तो सेम क्वेश्चन से पूछना, उसको थोड़ा सा मोल्ड कर दो, लाइक डिफाइन नाउन, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन आर देयर, give the examples of abstract noun, collective noun, then identify the noun, आपने identify करना है। So this is the way how you are going to write your terminal behavior testing, right? अब ये जो टर्मिनल बिहेवियर टेस्टिंग है इसमें कम से कम 4 to 5 क्वेश्चन होने जरूरी है। नेक्स्ट कम्स दी होम असाइनमेंट। होम असाइनमेंट आपने वैसे ही दे देनी है जैसे आपको क्लासरूम्स में मिलता है, ओके। नाउ ऊपर वाला प्रोज और पोइट्री वो था ग्रामर का। प्रोज और पोइट्री की अगर हम बात करें, ऊपर वाला सारा सेम है, बस प्रेजेंटेशन डिफरेंट है, या नीचे वाला भी सेम है टर्मिनल बिहेवियर टेस्टिंग और फाइनल असाइनमेंट जो आपने देने हैं, बट प्रेजेंटेशन कैसे करना है, अगेन यू आर गोइंग टू मेक द 4 modules। उसमें क्या करना है, फर्स्ट मॉड्यूल अगर आप पोइट्री करवा रहे हैं देन यू आर गोइंग टू राइट स्टैंजा, बट इफ यू आर टीचिंग द prose then you are saying paragraph, then don't write the stanza, ठीक है। These are the 2 different things, okay। Now if you talk about the PT activity, right, now PT activity में क्या आएगा, PT activity अब यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है, right। PT will recite first stanza with proper stress, rhythm and intonation, right। Then pupil will listen carefully. While the teacher is reading, the child is listening carefully. No BB work. Then PT will ask the student to recite or read the stanza with proper stress and intonation. अगर तो prose है तो read आएगा, अगर poetry है तो recite आएगा। So this is the one you need to focus upon, that where you are going to write the read and recite, right? Okay. Then while the teacher has asked one student, the pupil will read or recite the stanza or paragraph with proper stress and intonation. Again, no BB work. Then moving on to the next one, PT will write difficult word meanings on the blackboard. When PT is writing on the blackboard, what is the pupil doing? Pupil will note down difficult word meanings in their notebook, right? So on blackboard the teacher is writing, so on the BB work column we are writing the word meaning, right? Then comes PT will explain the stanza with the help of teaching aid। तो अगर जब सारा कुछ हो गया तो टीचर क्या करेगा, उसको एक्सप्लेन करेगा। तो pupil will listen and observe carefully. She is listening to what the explanation is and the pupil is observing carefully the teaching aid, right? अब यहाँ पर लास्ट में क्या आएगा, PT will ask question from the pupil। क्वेश्चन जो स्टांजा पढ़ाया है उसके कंटेक्स्ट में क्वेश्चन पूछेगा एंड pupil will reply that। उसके आंसर्स जो है वो यहाँ पर आ जाएंगे, राइट। So this is the way how you are going to attempt the prose and poetry section, and then after making all the modules, then terminal behavior testing and the home assignment. I hope you understood it. So if you have any query, you can post it. Thank you.